Despite reports of disengagement and withdrawal of Chinese troops by 1.5 kilometers in the Galwan Valley, the Indian Army and especially the Indian Air Force are on maximum alert in Ladakh. India Today brings you this exclusive ground report from an undisclosed base in Ladakh, where India's air warriors are staying vigilant night and day. These never-before-seen up-close images, accessed exclusively by India Today on the ground, show how the Indian Air Force is prepared for any challenge at the line of actual control. The Indian Air Force is not taking any chances. China may be beginning the long process of disengagement, but on the ground and in the air, the Indian Air Force is on maximum alert with night operations, with modern equipment, including the Apache helicopters that you see in these pictures, guarding airspace over Ladakh. लद्दाख में चीन से लगने वाली सरहद पर एक फॉरवर्ड एयर बेस से वायुसेना के दिन के ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई और इस वक्त हम आपको वायुसेना के नाइट ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त चीनी सेना के साथ विवाद के बीच वायुसेना दिन और रात 24 घंटे हर वक्त तैयार है और इस वक्त एक अपाचे हेलीकॉप्टर नाइट ऑपरेशन के लिए जा रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और खासतौर से माउंटेन वारफेयर के लिए मुफीद माना जाता है। इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं। इस फॉरवर्ड एयर बेस से वायुसेना का अपाचे हेलीकॉप्टर नाइट ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहा है। रिफ्यूलिंग की जा रही है, साथ ही इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि रात का ऑपरेशन काफी खतरों से भरा होता है। हालांकि अपाचे हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये बहुत ही एक अच्छा हेलीकॉप्टर है, खासतौर से माउंटेन वारफेयर के लिए। इस वक्त जिस इलाके में भारत और चीनी सेना आमने सामने खड़ी है, उस इलाके में अपाचे हेलीकॉप्टर दिन और रात के वक्त दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। और इस वक्त न सिर्फ अपाचे बल्कि इसके अलावा चिनूक और मी-17 जैसे हेलीकॉप्टर भी इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। इसके साथ ही जो लड़ाकू विमान है वायुसेना का, वो भी दिन और रात के वक्त लगातार उड़ान भर रहे हैं। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजित नेगी, फॉरवर्ड एयरबेस। वायुसेना के इस नाइट ऑपरेशन में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वायुसेना के जो लड़ाकू विमान है सू-30 के अलावा मिग-29 इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि हेलीकॉप्टर की अगर बात की जाए तो अपाचे, चिनूक और मी-17 जैसे हेलीकॉप्टर इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। इस वक्त वायुसेना दुश्मन को कोई मौका नहीं देना चाहती और इसीलिए दिन और रात 24 घंटे दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख रही है। एयर वॉरियर्स रात के अंधेरे में मुश्किल हालात में लगातार निगरानी कर रहे हैं। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजित नेगी, फॉरवर्ड एयरबेस। मौजूदा वक्त में चीनी सेना के साथ तनाव के बीच वायुसेना के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर पूरी रात नाइट ऑपरेशन कर रहे हैं। इस वक्त हम आपको अपाचे हेलीकॉप्टर दिखा रहे हैं जो कि एक ऑपरेशन के लिए तैयार है। इसकी खासियत दिखाते हैं, मारक क्षमता दिखाते हैं। इस पर दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक मिसाइल पॉट लगाया गया है, जिससे दुश्मन के खिलाफ मिसाइल से हमला किया जा सकता है। साथ ही मशीन गन भी इस पर तैनात की गई है जो कि दुश्मन के खिलाफ रात के वक्त भी कार्रवाई कर सकती है। और साथ ही इसका रडार सिस्टम आगे लगा हुआ है। और अगर अपाचे हेलीकॉप्टर हाल में ही अमेरिका से खरीदे गए हैं और इस हेलीकॉप्टर की खासियत यही है कि इस वक्त खासतौर के लद्दाख के जिस इलाके में भारतीय सेना चीनी सेना के साथ आमने सामने खड़ी है, उस इलाके में ये किसी भी ऑपरेशन के लिए बेहतर माना जाता है। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजित नेगी, फॉरवर्ड एयरबेस। जोश है, आप यहाँ पर एक युवा कर्मी हैं, वाइस वॉरियर हैं और दिन और रात की फ्लाइंग यहाँ पर लगातार चल रही है। जिस तरह के हालात अभी बॉर्डर पर बने हुए हैं, हमारा जोश जो है इस समय आसमान से भी ऊंचा है और भारतीय वायुसेना का हर एक वायुयोद्धा, हर एक वायुयान पूरी तरह सक्षम है और हम किसी भी परिस्थिति के लिए इनसे निपटने के लिए एकदम तैयार है। अगर क्योंकि सामने चुनौती है दुश्मन की, कम समय में आप लोगों को एयरक्राफ्ट को तैयार करना होता है। जी, हमें जैसा कि पहले से ट्रेंड किया जाता है कि जैसी परिस्थिति होती है उसके हिसाब से हम लोग अपना एक्शन लेते हैं। अभी कम समय है तो उसी के हिसाब से हमें निपुण किया जाता है, तो उसी हिसाब से हम लोग अपने सारे जो उपकरण है वो रेडी रखते हैं, जिससे हमारे पायलट्स वगैरह जो भी एक्शन लेना होता है वो ले पाते हैं। सर, कैन यू टेल अस व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नाइट ऑपरेशन? The night operations have an inherent element of surprise. The Indian Air Force is fully trained and ready to undertake entire spectrum of operations in any environment with the help of modern platforms and motivated personnel. So this forward air base strategically is very important.
And if in the current under the current circumstances, is if China and Pakistan both attack together, so how will we deal? Yes, this airbase is well equipped and ready to undertake and support the operations on both fronts simultaneously. I want to go across now to India Today's Gaurav Sawant and Abhishek Bhalla joining me live. Abhishek is in Ladakh at this time. Abhishek, tremendous images accessed by Manjeet of these night operations by Indian Air Force, Apaches and Chinooks. Clearly, there's no downtime at all at this point of operational readiness. The disengagement may have started with some baby steps, but clearly alertness levels couldn't be higher. First of all, what Manjeet has accessed firsthand is what we've been seeing every evening over the skies of Leh here. There is heightened air activity, not just during the day, but even during evening and sometimes late at night as well. And the reason for that is obviously while disengagement is being discussed, but as far as the Air Force or the Army is concerned, they need to be completely operational ready. We are hearing since yesterday that at least in Galwan Patrol Point 14, there has been a pullback by both the sides, but constant verifications is what is required to make sure that the Chinese have indeed retreated. We are hearing that it's about 1.8 kilometer retreat that they've made. They've removed their tents, but there is still some, presence of their troops who keep coming to the line of actual control. Yes. That could be the reason that they too are carrying out the verification. But yes, in time to come, this kind of disengagement has to take place in other sectors as well. And places like Pangong so can be really challenging. Gaurav, very high tempo of operational readiness in Ladakh, and these, first access images up close with the Apaches, the Chinooks, the Su-30s, the MiG-29s really gives the country the first glimpse of what it's like, for a country to be on 24/7 alert in the combat zone. Shiv, the Indian Air Force says the more you sweat in peace, the less you bleed in war. And this is the Indian Air Force actually sweating it out in a no war, no peace scenario where you have your Apache helicopters. Remember, these helicopters are just coming in from the United States of America. They're coming in, they're being inducted in high altitude area, flown in on heavy lift transport aircraft, assembled, ready for operations. And this is what perhaps compels the Chinese to go in and smoke the peace pipe with India and talk about withdrawal. The Chinese would never talk about withdrawal if they didn't know India's strength, India's might along the line of actual control, and India's preparedness to show our comprehensive national power. You have your army deployed, you have your Su-30 air dominance fighters, the MiG-29 air superiority fighters, the Mirage 2000s. You also have the Apache helicopters, also lovingly called the Ferrari of attack helicopters, because they are so potent, so powerful, so capable that there's almost nothing that can counter it should the attack helicopters be deployed along with tanks. And you and I know what Apaches and tanks can do together in some of these areas. So perhaps that's the reason why we see a tactical withdrawal from the Chinese side, but nothing to celebrate till the time that their 2 divisions plus withdraw to their peacetime location, because this could well be, as you and I have been reporting very extensively along with Abhishek and Manjeet, Shiv, Chinese could tactically withdraw and then surprise us. Absolutely. That is why this op alertness and op readiness is extremely important at this point of time. Very, very important not to let the guard down even for a moment, and we've just shown you proof through Manjeet Negi, the only reporter in the combat zone to bring you images of this kind. Gaurav and Abhishek, thank you for that. It's been 2 months since the India-China